Ladies and gentlemen, it gives me pleasure to invite Dr. Khalid Hameed, who is a renowned scientist in agricultural research, a PhD in plant protection from UK and chairman of Tara Group of Pakistan, to please come on the stage. He will be sharing insights and understanding on climate smart cotton breeding. Dear speakers, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक मेरा जो है वो कॉटन है। यहाँ पर तारा ग्रुप सिर्फ कॉटन के ऊपर पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, बल्कि बाकी तमाम फील्ड क्रॉप्स जिसमें कॉर्न, वीट, कैनोला, हाइब्रिड राइस, वेजिटेबल्स का ब्रीडिंग प्रोग्राम है। तो लास्ट 10 ईयर्स से तारा ग्रुप ने अपने जो मेन फोकस है दैट्स ऑन दी ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ द फील्ड क्रॉप्स, इसके ऊपर हमारा प्रोग्राम है। तो हमारा जो विजन है कि टू बी ट्रस्टेड एंड लीडिंग ग्रुप इन एग्रो इंडस्ट्री। ट्रस्टेड इसलिए कि फार्मर हमारा जो है वो बहुत ही लेमैन है, तो फार्मर का हम ऐसा काम करें एग्रो इंडस्ट्री में कि फार्मर हमारा ट्रस्ट करे। अगर हम कहें कि हम ये बीटी कॉटन दे रहे हैं या हाइब्रिड राइस है या बीटी राइस है या बीटी कॉर्न है व्हाट्सएवर, तो हमारा फार्मर उसके ऊपर ट्रस्ट करे कि हमें जो चीज़ मिल रही है वो हमारी बेटरमेंट ऑफ द यील्ड है और हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। तो ये एक हमारा विजन है जब से मैंने ये कंपनी बनाई है। नेक्स्ट मिशन है कि इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ आवर कस्टमर। हमारा कस्टमर है मेनली फार्मर एंड देन एम्प्लॉइज किस चीज़ से? क्वालिटी सर्विसेज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस का रिसर्च है। लेकिन पाकिस्तान में जो गैप है, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन क्वालिटी सर्विसेज का गैप है कि हम ईमानदारी के साथ क्वालिटी सर्विसेज फार्मर्स को नहीं देते। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन में टेक्नोलॉजी से बेहतर जो क्रॉप की मैनेजमेंट है, जिस तरह इस साल बारिशें हुई तो क्रॉप मैनेजमेंट के साथ फार्मर्स ने अपनी बेहतर पैदावार हासिल की। तो क्रॉप मैनेजमेंट जो है टेक्नोलॉजी के बाद वो अवेयरनेस फार्मर को देना, वो दैट इज द सर्विसेज। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यूज हैं कि इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज, रिस्पेक्ट एंड केयर, एक्सीलेंस, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हम इन कोर वैल्यूज के ऊपर तारा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक चीज जो होती है पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। माशाल्लाह पब्लिक सेक्टर के पास तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई हैव विजिटेड अयूब रिसर्च, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, निपजी, नयाब। इक्विपमेंट्स इतने हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जब आया हूं तो एक इक्विपमेंट लेने के लिए हमें पता लगता है कि मिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं। लेकिन जो हमारे रिसर्च के अदारे हैं वहां पर इक्विपमेंट्स ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। तो हमारी जो कोलैबोरेशन है बिटवीन दी प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप, वो जिस तरह के दुनिया के ममालिक में होता है वैसा नहीं होता। इसलिए हमें जो खुद काम करना पड़ता है, इसलिए हमने अपने फार्म एस्टैब्लिश किया। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर कौसर मलिक साहब यहाँ पर बैठे हैं। हमने बायो सेफ्टी लैब, टॉक्सिकोलॉजी लैब, हमने कहा हमें क्या ज़रूरत है, निपजी काम कर रहा है। हमने निपजी के पास गया, निपजी से रिक्वेस्ट किया कि फंड हम करते हैं, इक्विपमेंट हम परचेज करते हैं, आप हमसे फंड्स लें, फंड्स लेने के बाद लैब एस्टैब्लिश करें और हमारी बायो स्टडीज जो है वो आप टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज करें, और हमारी जो फंडिंग है उसको आप एडजस्ट कर लें इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में। उन्हें कहा जी हम अप्रूवल लेते हैं। वो 2 साल हमने इंतजार किया, लेकिन वो अपनी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ले सके, जिसकी वजह से फाइनली हम डिले हो गए अपने प्रोजेक्ट में। हमने 2 साल के बाद अपनी टॉक्सिकोलॉजी लैब जो है उसके ऊपर काम शुरू किया एंड फाइनली वी हैव एक्रीडेटेड। तो जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है वो हम ऐसे हैं, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तरक्की होती है, लेकिन हमें हर प्राइवेट कंपनी को, बहुत कंपनीज हैं, लेकिन अगर हर प्राइवेट कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जीरो से डेवलप करके रिसर्च में जाएगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमें यह चाहिए कि जो हमारे जो एकेडमिया है और रिसर्च के जो इदारे हैं उनका जो काम है वो करें, और वो एक लेवल तक रिसर्च करने के बाद वो सबलेट कर दें टू प्राइवेट सेक्टर फॉर कमर्शलाइजेशन। तो इसके लिए मैं जो हमारे पास है, हमें ये जीरो से काम शुरू करना पड़ता है। हमारे 1100 से ज़्यादा अपने फार्म हैं फॉर द रिसर्च। नेक्स्ट फिर हमने ये लैब्स एक्रीडेटेड कराई हैं 17025, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी लैब, बायो सेफ्टी लैब, टॉक्सिकोलॉजी लैब, पेस्टिसाइड लैब, फर्टिलाइजर, फाइबर टेस्टिंग एंड सीड टेस्टिंग।
हमने ये जो फाइबर टेस्टिंग है ये भी अपना इक्विपमेंट लिया है, जो कि ये एप्टमा का काम है। एप्टमा के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन वी हैव टू बाई आवर ओन इक्विपमेंट्स। और हमने ये मुल्तान और लाहौर में लैब स्टैब्लिश की ताकि हम एक सीड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास पूरा हो और उसके लिए हम रिसर्च कर सकें। नेक्स्ट, ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी लैब है, फाइबर टेस्टिंग लैब, नेक्स्ट बायो सेफ्टी लैब है, इसमें गिनी पिग्स वगैरह। तो हमारी ये इन हाउस रेयरिंग फैसिलिटी है। एंड मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में शायद एक या दो प्राइवेट अदारे हैं जिनके पास ये पूरी फैसिलिटी नहीं है। और अभी तक जीएलपी और आईएसओ 17025 एक्रीडिटेड पब्लिक सेक्टर के पास एक सिंगल लेबोरेटरी भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में 2 लैब्स हैं जिनके पास ये टॉक्सिकोलॉजी लैब जो है दैट इज द एक्रीडेशन है, जिसमें 4 ब्रदर्स है और तारा ग्रुप है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई तीसरी लैब नहीं है जो कि टॉक्सिकोलॉजी की इंटरनेशनली एक्रीडेशन हो। नेक्स्ट, इसमें इनहेलेशन चैम्बर है, तो ये इनहेलेशन भी 6 बैच स्टडीज हम इसको कर लें जो कि बायोसेफ्टी रूल्स की एक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, कॉटन के ऊपर क्योंकि मेरी ये असाइनमेंट थी, तो कॉटन हम ये डेटा है मेरा 1947 से अब तक हमारी रिक्वायरमेंट 15 मिलियन बेल्स है और अब हम अनफॉर्चुनेटली 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गए हैं। ये क्या है? दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल है जो कि प्ले होना चाहिए था वो नहीं हो सका। और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो कॉटन लग रही है मेजॉरिटी नॉन रजिस्टर्ड अनअप्रूव्ड वैरायटीज लग रही हैं। अप्रूव्ड वैरायटीज का शेयर इज वेरी स्मॉल। ये हमारी जो कानूनी फुकदान है उसकी वजह से है। तो हम दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर हमारा क्लाइमेट चेंज का रोल है, तो टेम्परेचर हमारा डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और वो जो टेम्परेचर हीट टॉलरेंट वैरायटीज वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए से ही हासिल हो सकती हैं। तो टेम्परेचर की ये फिगर है। नेक्स्ट, फिर हमारी जो दूसरी क्रॉप्स हैं उन्होंने इसका शेयर लिया। हमारा जो फार्मर है वो उसकी इकोनॉमी देखता है। राइस का एरिया बढ़ गया, कॉर्न का एरिया बढ़ा, शुगर केन का एरिया बढ़ा और पिछले 3 सालों में मुसलसल कॉटन का एरिया रिड्यूस हो गया। और पंजाब में मोर देन 6 मिलियन एकड़ के ऊपर कॉटन लगती थी जो कि 3 मिलियन एकड़ लग गई है। और ये अभी गवर्नमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड या अपॉर्चुनिटीज फार्मर को ना दी, उनके लिए इंसेंटिव्स ना दिए गए। और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी की जो मीटिंग्स होती रही और इसमें एक क्लियर कट स्टांस जो है वो गवर्नमेंट ने ना लिया, तो डेफिनेटली है कि ये और हमें इसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अदरवाइज हम कॉटन, जिस तरीके से कोई साहब ने कहा कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बाकी में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर चलेगी, पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो कॉटन का, लेकिन हम कॉटन उगा नहीं पा रहे। नेक्स्ट, क्लाइमेट का इफेक्ट क्या है कॉटन के ऊपर? डेफिनेटली है कि फ्रूट शेडिंग होती है हाई टेम्परेचर की वजह से, अनअवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि कॉटन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो नॉलेज है वो वेदर स्मार्ट, हमें वेदर फोरकास्ट होना चाहिए, प्रॉपर वेदर फोरकास्ट, जो कि फार्मर तक अवेयरनेस नहीं है। देन न्यूट्रिएंट स्मार्ट, सॉइल एनालिसिस बेस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई होने चाहिए। इसमें भी बायो फर्टिलाइजर्स ये अहम रोल प्ले कर रही हैं। देन कार्बन स्मार्ट, रेजिड्यू मैनेजमेंट, हमें अपनी पीएच सॉइल की वो बेहतर करनी है। एनर्जी स्मार्ट, सोलर के ऊपर जाना है हमने। एंड देन नॉलेज स्मार्ट, जब तक हमारा नॉलेज अप टू डेट नहीं होगा तो हम अपनी एग्रीकल्चर बेहतर नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर इज अब साइंस है। वो जो हमारा पुराना तरीकाकार था कि बाप अगर जिम्मेदार है तो बेटा जिम्मेदार होगा, तो वो है, वो नहीं हो सकता। अब मैं अपनी एग्जांपल ये देता हूं कि हमारे एग्रीकल्चर में, इस फील्ड में, हमारे जो खानदान का सबसे निकम्मा बंदा होता है, हम उसको कहते हैं कि या तो वो जिम्मेदार कर ले या वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में या किसी जरी यूनिवर्सिटी में चला जाए। जो पढ़े लिखे होते हैं वो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर्स बन जाएं। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है कि जो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में है, एटम बम में नहीं है। एग्रीकल्चर है तो सब कुछ है। तो लिहाजा हमारे ईवानों में बैठे हुए लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने आगे जाना है, आईएम से भीख बंद करनी है, तो हमें ये एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी है। नेक्स्ट, थ्रेट्स क्या है पाकिस्तान की कॉटन के लिए? क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है,
erratic rainfall pattern है. Insect pest, particularly bollworms, pink bollworm and white fly और मिली बग्स, ये हमारे लिए थ्रेट है. कॉटन लीफ कर्ल वायरस है. इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टेक्निक्स है, इसका बायोटेक्नोलॉजी से ताल्लुक नहीं, लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, क्वालिटी सीड, तो बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज इन वन और द अदर वे. सो सॉल्यूशन क्या है? ओनली एंड ओनली बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी ये मैंने लिखी क्योंकि सारे माशाल्लाह यहां पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैठे हैं. ये कोई नई चीज नहीं है, 12,000 साल पहले से ये काम शुरू है. उसके बाद नेक्स्ट, अब डीएनए की जो है वो भी 100 साल पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, 100 साल के बाद 1953 में डीएनए फिंगरप्रिंट का कंसेप्ट भी आ गया. देन जो डॉक्टर कौसर मलिक साहब ने बात की कि 1981 से पाकिस्तान में भी इंट्रोडक्शन है. 81 से लेकर आज तक करें तो ये 42 ईयर्स बन गए हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन आज भी हम वहां के वहीं खड़े हैं. वो कैसे खड़े हैं वो मैं अपनी आगे बात में करूंगा. नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन डिफरेंट डिसिप्लिन्स में है, सारे दोस्त जानते हैं. नेक्स्ट, जीएमओ क्या है? कुछ इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीएम सीड, बायोटेक सीड, ट्रांसजेनिक सीड, डिफरेंट एक ही चीज है. नेक्स्ट, इस वक्त दुनिया में 2021 में 5.23 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रांसजेनिक क्रॉप की मार्केट थी, जो कि डेटा बताता है कि 2026 में ये 12 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो कि एवरी ईयर 18% ग्रोथ है. वेयर एज हम सिर्फ एक कॉटन के ऊपर खड़े हैं और हम दूसरी किसी क्रॉप की इजाजत नहीं दे रहे हैं. हम सिर्फ एक, हमारी सुई अड़ी हुई है सिर्फ कॉटन के ऊपर. और वो कॉटन का जो बेनोला है, क्या उसमें बायोटेक्नोलॉजी, वो जीएमओ नहीं है? उसका तेल तो हम सारे खा रहे हैं, गाय भैंस को भी खिला रहे हैं, डायरेक्ट भी ले रहे हैं. वो हमें जो है वो हजम हो रहा है, लेकिन सोयाबीन हजम नहीं हो रहा, कॉर्न हमें हजम नहीं हो रही, वो हमें नजर नहीं आ रही. तो बेसिकली जो बात कुरैशी साहब ने की है कि यहां पर एक टेक्नोक्रेट का फॉर्म होना चाहिए जिसको कि ये डिसीजन होनी चाहिए, और ईपीए जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी हो, किसी पॉलिटिकल, किसी ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो. ये टेक्निकल कमेटी अपने खुद डिसीजन करे और ये अप्रूवल दे इस चीज को, हम आगे निकलें. ये दिस इज द वे फॉरवर्ड. नेक्स्ट, पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी को स्टेटस क्या है? ये बात हुई कि 2005 में ये रूल सारे बन गए. उसके बाद 18 की पॉलिसी, यानी मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें एजेंडे में चीजें हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है. कौसर मलिक साहब ने प्लांट ब्रीडिंग राइट्स की बात की, 16 में बन गए, 18 में रूल्स बन गए, इंप्लीमेंटेशन नहीं है. इंप्लीमेंटेशन में हम फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस तरीके से आगे बढ़कर काम नहीं कर पा रहा. तो बाज़ औक़ात चीज़ें जो होती हैं वो बुक्स में आ जाती हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती. तो हमारा जो पिछली स्लाइड पर जो एट प्रेजेंट जो है, ये कौसर मलिक साहब ने बात की, तो नीचे जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है उसके ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड टेक क्लियर कट स्टांस ओवर बायोटेक्नोलॉजी इंडक्शन. करनी है कि नहीं करनी, लॉलीपॉप नहीं, आधा तितर आधा बटेर नहीं. या तो प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करें, आज कह दें कि हमने पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी को बैन करना है, हमने नहीं करनी. अगर करनी है तो देन ओपनली उसकी इजाजत दें. यह ना हो कि कभी एक मिनिस्ट्री में, कभी दूसरी मिनिस्ट्री में, कभी तीसरी मिनिस्ट्री में, कभी चौथी कमेटियां बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसला कोई नहीं हो पा रहा. तो ये किसी ना किसी को ये क्लियर कट स्टांस लेना पड़ेगा कि आया कि हमने पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी की इंडक्शन होने देनी है या नहीं होने देनी. तो ये मेरी आखिरी इसमें थी. नेक्स्ट, तारा का जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, मैडम सिर्फ 2-3 मिनट मुझे दे दें. तो हमने जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो हम हीट एंड ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज बना रहे हैं, जर्म प्लाज्म एनहांसमेंट है, और इंप्रूवमेंट ऑफ फाइबर क्वालिटी के ऊपर हमारा काम है. आइडियो टाइप है मैकेनिकल पिकिंग के लिए एंड क्वालिटी सीड के लिए. ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी रिसर्च के. नेक्स्ट, अब तक की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, तारा 333 जो है इसकी कमर्शलाइजेशन हो गई है, और बाकी जो वैरायटीज आपने देखी है कि इसकी टैक्स से अप्रूवल हो गई है फॉर दी ट्रायल्स के लिए. तो हम शुक्रगुजार हैं मैडम आपके कि आपने हमें कम से कम ये कॉटन में तो इजाज़त दी हुई है कि आप इसमें काम करें.
तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और ये जो आपने अवेयरनेस का ये आज जो सेमिनार किया है, इसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक पब्लिक और प्राइवेट लोगों को आपस में बिठाया है और हमारी भी बातें सुन रहे हैं और हम पब्लिक के सेक्टर की भी बातें सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें डेवलप ऑफ CLCV टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं। तो ये हमारी जो अचीवमेंट्स हैं ये तारा ग्रुप की हैं। नेक्स्ट जी। ये अब तक हमने जो, आप ये देखें कि इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे पब्लिक सेक्टर के दोस्त भी बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी जिस तरीके से कुरैशी साहब ने कहा कि इनकी वैरायटीज़ हैं 3 साल से रजिस्टर्ड नहीं हो रही, वो लेवल प्लेइंग फील्ड, एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो कि पब्लिक सेक्टर को है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। और मैं इस चीज़ की आपको ये गारंटी देता हूँ यहाँ पर, ये मैं कोई नहीं कहना चाहता कि पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर कॉटन का रेवोल्यूशन अगर आ सकता है तो अगर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर के एनकरेज करने के साथ इंशाल्लाह जो कॉटन का रेवोल्यूशन है ये प्राइवेट सेक्टर इंशाल्लाह लेके आएगा। अब आप ये देखें कि CCRI का देख रहे हैं, CRS का देख लें, तो वैरायटीज़ जो हैं उसकी जो आगे लेके आना जो है ये प्राइवेट सेक्टर को बराबर की अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और आगे जाएगा। तो आप ये देखें ICS 386, इसके जो करेक्टर्स नीचे दिए हुए हैं 337, 333 और 224 डबल जीन। तो कॉटन के ऊपर हमारे पास ऐसा प्रॉमिसिंग मटेरियल है कि लोधरा में जो कि हब है CLCV का, वहाँ पर अगर पूरे पंजाब में अगर किसी ने 500 एकड़ का बड़ा फार्म देखना था जिसके ऊपर कॉटन थी, हमने फेब में कॉटन लगाई। इस बारिश के साल में भी हमने 69 मन फी एकड़ ली पैदावार 50 एकड़ के ब्लॉक से, 50 एकड़ के ब्लॉक थे। तो वैरायटी, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आज के दिन में भी हम 70 मन 60 मन कॉटन ले सकते हैं, वेयर एज हमारा जो फार्मर है वो 5 मन भी नहीं ले सका। इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी भी जब वो अनरजिस्टर्ड लोगों के हाथों में जाता है तो वो कहता है कि जी 2 लाख रुपए की बोरी, 50,000 रुपए की बोरी, जब तक अप्रूवल होगी तो उसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है अप्रूव्ड वैरायटियों का। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो अप्रूवल प्रोसेस है, तो ये हमारे पिछले दिनों में गवर्नर पंजाब साहब के साथ मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ हमने रिक्वेस्ट की कि पंजाब सीट काउंसिल की मीटिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि 1 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए। आज उसकी सब टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हो रही है और परसों पंजाब सीट काउंसिल की मीटिंग हो रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को स्पीड अप किया है। 1 साल से पंजाब सीट काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो हमारी ये वहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि जब वैक में अप्रूव चीज़ हो जाती है तो पंजाब सीट काउंसिल, सिंध सीट काउंसिल के लोगों को वैक में लाकर बिठा दें, जो फैसला करना है वो वैक में बैठ के कर लें, डुप्लीकेशन ना हो कि पहले वैक में अप्रूवल हो उसके बाद काउंसिल्स में चली जाए। तो लिहाजा काउंसिल के लोगों को बिठाएं वैक में, और वैक इज दी नेशनल लेवल के ऊपर अप्रूवल अथॉरिटी है और वो आके अप्रूव करे तो आगे पूरे पाकिस्तान में उसकी इंट्रोडक्शन हो। तो ये हमारे ओकरा लीफ वैरायटीज हैं जिनके बिग बोल साइज है, और रेड रशियन है कलर मार्किंग के लिए, सेमी ओकरा है, ये हमारे पास मटेरियल मौजूद है और इसके ऊपर ब्रीडिंग प्रोग्राम है। ये मुख्तलिफ डिग्निटीज़ जो है फ़ख्र इमाम साहब, ये वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के, और एंड के ऊपर मैडम इन्होंने विज़िट किया हमारा जो तारा कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ है उसको विज़िट किया। इन्होंने इधर से ट्रैवल किया और बहुत ट्रैवल किया, और मुझे मेरी टीम ने बताया कि ये अनथक है। इन्होंने कहा नहीं, जब तक मैंने सारे फील्ड विजिट नहीं कर लेने मैंने उस वक्त तक होटल में नहीं जाना। तो वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम निकाला और विजिट किया। और मेरी ये आखिरी स्लाइड है कि रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, पहला था नोलिथिक रेवोल्यूशन जो कि बंदरों और इंसानों के साथ था। दूसरा उसके आया ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जब मैकेनाइजेशन आई, मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई, ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुए। एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन, जब क्रॉप की पॉपुलेशन, क्रॉप का जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। और अब जो इरा है दैट इज जीन रेवोल्यूशन। अब जीन रेवोल्यूशन से हम फ्यूचर हमारी होप है, और पाकिस्तान की अगर तरक्की है तो सिर्फ और सिर्फ जीन रेवोल्यूशन से है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ DG EPA को और इनकी टीम को, डॉक्टर कौसर मलिक साहब को, कि ये हमारे लिए फैसिलिटेटर बने, प्राइवेट सेक्टर को ख़ास तौर पर ये चीज़ें फैसिलिटेट करें ताकि ये जो जीन रेवोल्यूशन है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर सके। सो थैंक यू वेरी मच जी।
Honorable attendees, I am delighted to call to the stage our last speaker of this session, an accomplished scientist with extensive expertise in the field of biotechnology, Dr. Samina Mehnaz. Dr. Mehnaz has received numerous fellowships and awards and has published extensively. Her contributions make her an inspiration for many and an excellent example of women contributing equally in the area. Today, she will shed some light on the topic microbes for climate resilient agriculture. Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank DG Environment Protection Agency, Dr. Faizana. She made sure कि इस कदर भरपूर मर्दाना प्लेटफॉर्म में एक खातून भी होनी चाहिए. So she invited me and she insisted me that I have to be here. So we were listening such a passionate speakers, so it's difficult for me to make my space among all these. I'm going to shed light on entirely different thing जिस पे अब सारे लोग बात कर रहे थे, agriculture biotechnology which needs to approval from NBC से, TAC से, Seed Council से. So what I'm going to talk is about microbes and more specifically about bacteria जो मेरा area of expertise है पिछले 32 साल से. You guys are more familiar with the agriculture problem in our country and internationally as well. What we are facing nowadays, global warming, temperature is increasing every year, water scarcity, we are looking for the dams, जो कभी बन रहे हैं, कभी नहीं बन रहे. Diminishing arable land, हम housing societies बना रहे हैं, agriculture को पीछे छोड़ते जा रहे हैं. Then excessive use of agrochemicals. जिस वक्त green revolution आया, उस वक्त it was the need of the time. कि इतनी population को feed करना था, yield ज़्यादा चाहिए थी. Now we are facing the problem because of that green revolution. So it's responsible for environmental hazards as well as fertility of soil जो है, we are losing that because of excessive use. Then we have calcareous soils, alkaline soils, saline soils, waterlogging, so lots of problem here. Then with all these things, when the population is also increasing, biotic and abiotic stresses are increasing, then feeding such a huge population itself, it's a big challenge. Next, please. How we can handle these stresses? All of the speakers have shed light on agriculture biotechnology. I'm just going to talk about microbial biotechnology, what it provides, an alternative for all the agrochemicals, what they can be. Biofertilizers, two of our speakers have talked about it. Biopesticides, biofungicides, bioremediation of soil and water, जो आपकी soil infertile होती जा रही है, उसको आप cure कर सकते हैं by using the microbes. Water जो contaminate हो रहा है, उसको हम वापस कर सकते हैं. So what are these? These are mostly bioformulations. They are made up of either bacteria or fungi or the combination of both. Next, please. Among bacteria, there is a group of microbes which is known as plant growth promoting rhizobacteria. Why they call plant growth promoting? Because they increase the plants. And how do they increase the plant? They produce all the hormones which plants are producing, auxin, gibberellin, cytokinins. Then what else they do? They can fix the nitrogen. जो nitrogen आप यूरिया से provide करते हैं अपनी crops को, ये atmospheric nitrogen को ammonia में convert करके plant के लिए available करते हैं. Then they excrete some enzymes, they excrete some acids, और जितनी phosphorus, potassium, zinc वहाँ पर मौजूद है, but plants को available नहीं है, they convert it into soluble form and then plant can uptake it. Then we use the pesticides all over our agriculture that can be replaced or at least can be reduced by using these microbes and make a formulation as a biopesticides. Why we should go for biofertilizers and biopesticides? They are eco-friendly, where you can apply them, you can apply it on the seeds, you can coat the seeds with these bioformulations, you can apply it on the plant surface, you can dip the root system wherever we do the nursery transplantation kind of stuff. We can just make the solution of these microbial culture, dip the root system and do the transplantation. We can add it into soil and then these microbes can colonize the plants. Next, please. From where we are getting these microbes? They are always there. जैसे हम कहते हैं कि ये germs हर जगह मौजूद हैं, so forget about the word germs. The bacteria, fungi, they are present everywhere. In nature, these microbes have plant interaction. So you can find them everywhere, inside the plant, outside the plant. You can find it in the soil where the plants are growing. You can find it on the surface of the root, surface of the shoot, surface of the leaf, as well as inside the plant. And we call them endophytes if they are present inside the plant and epiphytes if they are outside the plants. Next, please. The best thing is that they can survive everywhere.
The one which can survive in extreme environments, we call them extremophiles. So I have just given the list that where they can survive. High temperature, low temperature, high salt, acidic soil, alkaline soil, high pressure, where there is no water or more water, there is absence of oxygen, and you can apply these extremophiles and you can handle all the abiotic and biotic stresses which our agriculture is facing nowadays. Next, please. Next कीजिएगा please. Okay. So this picture is just showing that how these microbes can be applied and which problems they can solve by fertilizer. I have already talked about it. They also produce the siderophores. What are the siderophores? They are compounds which chelate the iron and then make this iron available to the plant and unavailable to the pathogen. So that helps the plant immune system. Then bioremediation is one of that. When we want to use the biopesticides, we have to look for the microbes which can produce hydrogen cyanide. They can produce lipopolysaccharides. They can produce antimicrobial compounds which include the antifungal compounds. Next, please. Okay. All over the world, government bodies are implementing the use of the biofertilizer. In 2020, Government of India made it mandatory that any farmer which will buy the urea, he or she will buy the biofertilizer as well. So they are more focused that input of chemical fertilizer should be reduced. In Europe, they are more focused on the biopesticides and they are emphasizing that disease management should be done through the biological control. The Common Agriculture Policy is more into sustainable use of plant protection products, restrict the use of synthetic fertilizer, restrict the use of synthetic agrochemicals, and promote the organic farming. आगे लेके जाएगा, please. Next, yeah, yes, here. The global biofertilizer market right now in 2024, they are expecting to be 2.53 billion. The speaker before me just showed that transgenic के लिए roughly $5 billion की market है, and here it's almost half of it is by the biofertilizer. So here we are going, and who is taking the major share? North America taking 28%, और उसमें से half जो है वो US लेके जा रहा है. 5 major key player हैं जिसमें से जो topper है वो Monsanto Agri है. And after US, we have China, we have India who are taking the major shareholder in the global market. Next पे लेके जाइएगा. So what is the status of biofertilizer in Pakistan? As Dr. Kausar also mentioned, there are more than 250 registered companies who are selling biofertilizer, or at least they are claiming that they are selling the biofertilizer, but most of them do not have microbes into it. What they are selling is they are organic fertilizer, they contain compost, they might contain humic acid. Some are selling the combination of the nutrients and the microbes. Like some companies are selling rock phosphate and then adding the bacillus into it, so it increases the uptake, the solubilization of the phosphorus, and then plant can take it. I started my career with Dr. Kausar in 1991. He was working on the biofertilizer. So I know that in 1996, NIBG launched Biopower. It was the biofertilizer, and they are still selling the Biopower. Recently, I came across that Four Brothers is also selling a biofertilizer. So these two, I'm familiar that they are really, really adding the microbes into it. Next, please. So what is the role of academia in promoting bioformulations? As I said, that NIBG is selling Biopower since 1996, and I was just talking to Dr. Said that how much demand is there for Biopower, and he said not much. We are producing 10,000 bags, but it's not like going very far. And I believe that major reason is that lack of awareness. Our farmer doesn't know about it, and they are not, if you tell them that these are the bacteria which you have to add in your crop, they would not be willing. So what we can do and what academia is actually doing for the promotion of the bioformulation, as everybody have shown that how many universities are working in biotechnology. So yes, every university is teaching biotechnology, and every university mostly have a microbiology department. And I will name just some of them where I know that they are doing it. There are not hundreds, thousands of publications. You just search, you Google it, and you will find the publications that they are working on the microbes, they have the data, but how many universities have a ready product to hand over to the farmers? I'm not familiar with any of them. Few years back, Agriculture University, Faisalabad was selling it under the name of EM, but that was not made by them. It was efficient microbes imported from Japan.
In Western countries, some universities do have their own company and they sell the bioformulation. Next, please. I will just give an overview that what we are doing in this area at FCCCU since Dr. Kausar have joined there in 2008 and he started that work. I joined him again after leaving NEBG in 2012 and I'm again the part of that big team. Next kijiyega please. So as I showed that microbes survive in all the extreme environments, what we have done, that we have collected the samples of the soils and roots and shoots of all the plants which are growing in the extreme area. So if you're not familiar with the terminology that mesophytes which are growing in the normal condition, I have just given the pictures of some of the plants from where we have collected the samples and we have isolated the microbes. Can you go quickly through please? Next. So ये xerophytes हैं, these are the plants which are growing in less water condition. Next. Halophytes, the plants which are growing in the saline soil. Next. So we have isolated more than 500 microbes, just to give you an idea how these microbes look like. They have beautiful color in it. And what we do, after isolating, we do identify them. आ जाइए next slide पे, please. जी. We have isolated them, we have identified them, so we should know beforehand that what we are going to hand over to the farmers. Are these the genera which are generally acceptable and they are non-toxic, so then we can make a product. Next. How they can promote it, and for that we have to screen. Not all the bacteria have all the good qualities, but we screen them that if we want to go for a biofertilizer potential, they should have ability to do, if not all the 4 criteria I have mentioned here, that some of them should be present there. If we want to develop a biopesticide, they should have these abilities which are listed there. We would be lucky that some bacteria do have the biofertilizer ability as well as the biopesticide ability. One can go for the individual bacteria as a biofertilizer and one can go for the consortium, like putting more than one microbes, that some have the ability of biofertilizer and some can be used as biopesticide. So if you make a formulation which can serve the both purpose, that would be a good product. Next please. So these are just the plate assays. So when we are screening them, first thing we do that we do the plate assays in the lab. Next. These are the antifungal activity. Next please. Okay, so what you do, once you know that which bacteria you can use as a biofertilizer or as a biopesticide, then we have to do the plant experiments. Doing lab assays is very quick, but then it has to go to the plants, and in the plant we go through these different steps. First step is that we provide extremely hygienic, sterilized condition, everything ideal for the plants, that plants are growing in the sterilized condition. We don't introduce any pathogen there, and look at how these plants are doing when they are inoculated with these bacteria. Once they do good under sterilized condition, then we switch to the natural condition. We take them to the pot experiments in the soil, we take the data from there, and then the final step is that take it to the field and then see that if they can work in the natural conditions. Next please. So I will just show you the pictures, not the graphs mostly, that where you can see the visible difference. ये सारे different crops के साथ, एक मिनट इसे पिछले वाली पे जाइएगा. Okay, this experiment was done by my master's student, and here what we have done, that we have coated the seeds with the bacterial formulation, and you can see that they were just in the very small pots, and the flowering was early, and cucumber was bigger than the control size. Next पे जाइएगा. ये field में लगे हुए हैं, they have used their residential plot and they grow the cucumber there. In the first one you can see it's still on the flowering stage where the microbe was not applied on the seed, where in the next one there are 2 different bacteria which were applied on the seeds and the fruit was there early. Next. We did the same thing with the bell pepper. Seeds को coat किया था हमने bacteria के साथ, and all these experiments have been repeated in the field at least 3 times. Next. ये हमारा सारा पब्लिश्ड काम है. हमने जिंक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया अप्लाई किए थे वीट के ऊपर, और उसके बाद एनालाइज किया था जिंक की प्रेजेंस को ग्रेन्स में, शूट्स में, रूट्स में. जहाँ भी आपको कुछ हायर बार दिखाई दे रही हैं वो हैं जो कि बैक्टीरिया इनोकुलेटेड थे. नेक्स्ट पे जाइएगा. ये सारा फॉस्फोरस के साथ हमने किया था, रॉक फॉस्फेट के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के डाले थे और उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसका असर देखा था. Next, this is one for the potassium and for the zinc. So we selected some of the bacteria which were promoting the potassium content and the zinc content of the plant parts. Next,
Okay, I'm just summing up my presentation. I hope that you can have your lunch on time. It has been concluded not by me, it is from the publications that the previous speaker said that we need a revolution. He said about the gene regulation. What we microbiologists are proposing is that earlier we had the green revolution, and most probably now what we need is a next generation green revolution. And it is required to achieve the future food security, and using microbes for deploying all these things would be a smart approach, and we can couple the biofertilizer with the agronomic practices. Thank you. Next, please. So, I just want to thank all the funding agencies, my group leader, my students, my staff. Next, please. Thank you so much.